So next video we will discuss about the advantage and disadvantage of parallel and series connection. So first one is parallel connection, second one is series connection. So if one electrical appliance stop working due to some defect, so the other all appliance keep work normally. So ਜੇ ਸਰਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੈਰਲਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਿਫੈਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ एक अपलायंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ टोटल सर्किट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रॉपरली वर्क करूँगा. बट इन केस ऑफ सीरीज बिकॉज करंट इज सेम थ्रू आउट दी सर्किट, सो इट मीन्स वन अपलायंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट, इट मीन्स होल ऑल दी अदर अपलायंस स्टॉप वर्किंग. जे एक सर्किट साडे को बंद हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो टोटल जिहड़ा साडे को सर्किट है हाउस होल्ड का डोमैसटिक पर्पज लिए यूज़ करते हैं या इंडस्ट्री लिए, वो टोटली साडे को स्टॉप हो जाएगा. बट इन केस ऑफ पैरेलल देयर इज़ नो दैट टाइप ऑफ कंडीशन आकाश, क्योंकि साडे को जो करंट है वो डिफरेंटली फ्लो करे थ्रू डिफरेंट रजिस्टर्स, डिफरेंट सर्किट्स. सो इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैज़ इट्स ओन स्विच ड्यू टू विच इट कैन बी टर्नड ऑफ एंड ऑफ इंडिपेंडेंटली. हरेक साडे कोले अप्लायंस की अलग अलग स्विच है जितों असीं ऑन ऑफ कर सकते हैं अलग अलग सैपरेटली. बट इन केस ऑफ इलैक्ट्रिक सीरीज़, सो देयर इज़ अ सेम स्विच फॉर ऑल द इलैक्ट्रिक अप्लायंस. So there is a no separately we turned on or off separately. So third one is each appliance get same voltage as that power source. जो power source तो साडे कोले voltage आ रही है वही same साडे को हर एक appliance नू मिल रही है. But in this case in series साडे को जड़ी the appliance don't get same voltage 220 volt as that power source line. जिन्नी साडे को 220 volt जे आ रही है तो हरेक रजिस्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੋਲਟੇਜ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵੋਲਟੇਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਓਵਰਆਲ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ. ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਰਕਟ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਡ ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਫਰੋਮ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਇਜ਼ ਹਾਈ. ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਈਜ਼ਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਲੋ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ लो होगी इन केस ऑफ पैरेलल कनैक्शन. बट इन केस ऑफ सीरीज़ साढ़े को सेम करंट आ जो फ्लो कर रहा सारे सर्किट की कोई अलग राह नहीं है, तो जिदे करके सर्किट रजिस्टेंस इनक्रीज करूगी बिकॉज पावर सप्लाई सोर्स इज लो. साढ़े को इस वेरीएशन कह सकते हैं इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट देयर इज़ अ लो रजिस्टेंस, इन केस ऑफ सीरीज सर्किट दैट इज़ अ हाई रजिस्टेंस. सो दैट्स वाई दी डोमैस्टिक सर्किट्स आर इन पैरेलल कनैक्शन, क्योंकि जे एक स्टॉप हो गया बाकी वर्क तो करूँगा, बट जो सीरीज लगा दिए तो साढ़े को जो प्रॉपरली वर्क हो नहीं करूँगा. क्लीयर. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलैक्ट्रिक करंट. सो व्हेन इलैक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूस हीट. असी हुण बल्ब नूं ऑन करते हैं, सो इट मीन अ पर्टिकुलर टंगस्टन फिलामेंट वी पीपल यूज, इट मीनस दैट इज हीट अप बिकॉज इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई एंड हाई रजिस्टेंस, वो हीट अप हो जाता, हीट अप होकर ग्लो करता है. सो इट प्रोड्यूस अ टू टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी एज वेल एज लाइट एनर्जी. सो इट मीनस व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ पर्टिकुलर कंडक्टर it also produce heat effect, heat energy. So on the basis of there is a law, Joule's law of heating. So let we discuss drive the relation of Joule's law of heating in terms of power or heat energy H. So we know that V equal to W upon Q. So potential difference W upon Q. So W equal to V into Q. It's a question number 1. So we know that power equal to W upon T. So substitute the value of W from this equation into this equation. So P equal to V into Q upon T. So Q is a charge, T is a time. We already know I equal to Q upon T. So current equal to Q upon T. So put this value in this equation. So P equal to VI. P equal to VI. Clear? So here P equal to VI. So we know that power equal to energy upon time also, so E equal to P into T. So put the value of P here, VI. So from equation 5 and 6 we get E equal to VI T. So heat is also a type of energy, so it means equation become H equal to VI T. When we, according to Ohm's law, when we substitute the value of V in case of IR, so it becomes H equal to IR into IT, it's I square RT. We also put value I equal to V upon R here, V upon R here. So when we substitute V upon R here, so it becomes V square upon R into T. So H also equal to V upon
V square upon R into T. So it's also for heat energy value. So on what factors the heat produced in a wire is directly proportional to square of current I square, resistance of the wire R, time for which current is passed कि साढ़े को particular कितना time consume कर रहे current flow कर ली. So the heat energy produced through a wire is directly proportional to how much current flow, that is a square of current, resistance of wire offered by the conductor and time for which current is passed. कितना time साढ़े को current pass out किया साढ़े को उस time पे साढ़े को depend कर दिया. So what is the heating effect of current, electric current? So when electricity pass through a high resistance wire, मतलब कि जिसकी resistance high है, for example nichrome wire, it is a combination of 4 metals, iron, chromium, manganese, nickel. So these 4 metal combination to form an alloy, that is nichrome. Nichrome is an alloy with the combination of 4 metals. So it's given on first or second page in your book, NCERT book, and under Ohm's law. Under Ohm's law, you see that what type of metal present in this nichrome wire. So the resistance of wire becomes high. It means it is not easy to flow the current through this type of wire. It means if current not flow easily, it means a maximum amount of current at a particular place. So it means it produce a particular amount of heat. So this is called heating effect of current or Joule's law of heating. So this heating effect of electric current we use for various purpose. For example electric toaster, electric iron. Electric toaster ਅਸੀਂ use ਕਰਦੇ hotel ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ to heat the samosas or bread or toast. So in case of electric iron we iron the clothes ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ by heating ਅਸੀਂ geyser, and that is also an example of heating effect of current. Another example is that is electric bulb. When we on the bulb particular which have filament tungsten, which have high resistance and high melting point, due to the flow of current not create a maximum resistance in a particular filament. So it means they heat up and after maximum heating it glows, so produce light energy as well as heat energy. Another important application of heating effect of electric current, that is fuse, which is used as a safety wire. ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ को maximum amount of current ਸਾਡੇ को पास आउट कर रहा थ्रू अ कंडक्टर, ਸਾਡੇ को वोल्टेज वेरीएशन ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ वेरीएशन ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. सो दैट सेव ऑल दी अप्लायंसेस प्रेजेंट इन अ सर्किट और इन अ हाउस. सो फ्यूज इज ऑल्सो एज यूज्ड एज अ सेफ्टी परपस. सो जो हाई करंट ਸਾਡੇ को वेरीएबल करंट ਸਾਡੇ को पास आउट करता, वेरीएशनस ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ उस टाइम ਤੇ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਅਪਲਾयंस ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਲਈ, ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ. ਕਲੀਅਰ. So next last topic of the chapter, what is electric power? So the rate of consumption of electric energy is known as electric power. So कितनी साढ़े को electric energy जिहड़ी consume हो रही है in a particular time, that is called electric power. So it is amount of electric energy consumed per unit time. So it is denoted by P. So P is equal to VI, which already we discussed in Joule's law of heating. So P also equal to V square upon R when we substitute the value of V in I in terms of V upon R. So when we put I equal to V upon R here. So when we put this value in this equation, so it becomes P equal to V square upon R. So what is the commercial unit of electric energy? That is किलोवाट आवर. सो 1 यूनिट जी असी कहने कि 1 यूनिट मच गई, 2 यूनिट्स मच गई, इन्नियां यूनिट साडियां बर्न हुई ने थ्रू आउट दी मंथ. सो दैट इज़ 1 यूनिट इक्वल टू 1 किलोवाट आवर. सो हाउ मच एनर्जी प्रेजेंट इन 1 किलोवाट आवर? दैट इज़ इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. एक यूनिट दे विच साडे को इन्नी एनर्जी असी कंज्यूम करते हैं टू वन यूनिट. 3.6 इंटू 10⁻6 जूल. सो वट इज़ अ कमर्शियल यूनिट which we use, that is 1 kilowatt hour. So it is also an important question, what is a commercial unit of energy? That is called 1 kilowatt hour, and SI unit of energy, that is called joule. So it is your first chapter. If you have any doubt in any topic, you can call me anytime. So there are number of topics we discuss in these two videos. If you have any doubt in any question, any topic, you call me anytime or send message. And also you learn the notes which are given by to ma'am in 9th class. That is almost the same
in these videos we have discussed with you. So if you have any kind of any doubt in this chapter, you can call me anytime. Thank you.